कॉर्पोरेट में अब हम बात करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर की। 1986 में शुरू हुई कंपनी आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस देती है। कंपनी का कामकाज भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। नतीजों की बात कर लेते हैं। नतीजे अच्छे रहे। इनफैक्ट इस क्वार्टर के मुनाफा करीब 25% बढ़कर 110 करोड़ आया है। वहीं आय 16% गिरी है, 1500 करोड़ पर आई है। हालांकि मार्जिन बढ़कर आए हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी ने खास ध्यान दिया है। क्या थे अहम ट्रिगर्स, आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत करते हैं कंपनी के सीएफओ जगन्नाथन चक्रवर्ती हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चक्रवर्ती, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सर मैं नंबर्स पर ही आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी। ऑफकोर्स रेवेन्यूज़ गिरे हैं 16%, लेकिन पहले तो चलिए ठीक है, पहले रेवेन्यूज़ पे ही बात करते हैं। क्या वजह थी कि रेवेन्यूज़ गिरे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी थी कंपनी के लिए, तो किस तरीके की आगे प्रोजेक्शंस है रेवेन्यू ग्रोथ रेट को लेकर FY23 में? Thank you for this opportunity to explain about our company now. Good afternoon to all investors also. We have to actually see the revenue into two different businesses. One is the software business, another is the value-added resale business. That is, we call it as India business. These two are different. Please don't combine and see this. Both the businesses are doing really well, but the India business will have the turnover will be up and down based on the contract renewal. And generally, the quarter two, that is July to September quarter, there will be some kind of a contract renewal time is the third quarter for most of the customers. So it will be a little lower there. So please don't compare that. You have to see year on year how much is the growth on turnover as well as on the gross contribution for India business. Whereas coming to the digital business, what we are talking about, we continue to see the demand in the market. We still believe that the medium-term demand, which was driven mainly by the cloud during the COVID times, is intact and it will continue to be there for the next 3 to 5 years' time. However, the recession, there is a lot of news on recession in the international market. We are also waiting and watching, seeing for that, what is that coming in for that. At present, we are not seeing any major impact of those things in our pipeline or order book or the rates realization or anything at present from the customer. We are very watchful and looking at what is that impact of any changes coming in now. Both US and Europe markets, at present, we are not seeing any major impact in the demand from the customer. So we believe that the growth maybe if even if the recession comes, it will be for a couple of quarters. There can be some impact on that. But the medium-term trend on technology demand will continue to be there. India business is very much aligned to the GDP growth of India. All of us know that India is doing well. So Indian business will continue to be doing well in the coming quarters also. Okay, तो इंडियन बिजनेस ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा आगे यहाँ प्रॉस्पेक्ट्स दिखा रहा है। ज़्यादा बुलिश बेट कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली थोड़े से रिसेशनरी फियर्स भी हैं यूएस एंड यूरोप मार्केट में, तो वहाँ कॉशियस होने की ज़रूरत है जैसा आप कह रहे हैं। बट सर मार्जिन्स की बात करना चाहूँगी क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन्स हमने देखे एक्चुअली बड़े हैं डिस्पाइट द फॉल इन रेवेन्यूज़। उसका क्या कारण है? 7.3% टू 9.4%। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो मार्जिन्स थोड़ा सा समझाइए सर, क्या ये सस्टेनेबल होंगे आगे? This is again, margins are two different businesses. We have to see it differently. Generally, when the margins in the India business will be little lower when the contract sizes or revenue sizes are very pretty large. In Q2, the contract or revenue sizes have been a little lower, so margins improved a little bit on this business. But we don't see overall year-on-year basis India business. We are not seeing any major pressures on the margin. Although please don't measure us on the percentage of margin. We have been articulating that you have to measure us on the growth of absolute gross contribution amount. So that will continue to grow, and we are very confident of maintaining the growth of more than 15% year on year. When it comes to international business, we have mentioned that the EBITDA range of 20 to 22% is what we expect for the year. But we have been doing well in the first 2 quarters. We expect that more of our investments and the salary, the demand situation is better now, and means the attrition levels are coming down, and the average cost of salaries are all little bit moderating now. So that is giving us some sort of support for the investments what we are doing. We expect the margin range to, as per the guidance, will remain in the same levels as per the guidance, or maybe the upper circle of the guidance what we have given. We are not seeing a major pressures on the margin because the pricing is holding.
and this will continue to be there. But Q4 we expect a little bit of moderation on the margin also due to salary increase cycle as well as to the investment which is coming in continue to be there for the growth. ओके, फेयर इनफ सर। तो 15% का ग्रोथ आप बरकरार रखने का लक्ष्य बता रहे हैं यहाँ पर आगे, और जहाँ तक मार्जिन्स की बात है रिमेन इंटैक्ट, यही लेवल्स अगर मेंटेन कर पाएंगे उसका एंडेवर रहेगा। सर, माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल प्लेटफॉर्मेशन सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक सर्विस दोनों कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 50% ऑफ योर रेवेन्यूज सर। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में वीक गाइडेंस दी है, क्या उसका कुछ असर दिख रहा है सर? आपके क्या विचार हैं इस पर? The Microsoft has actually been a major portion for us. We are not seeing any major impact on Microsoft till, but there can be some kind of a little softening there. But no, we are not seeing any major impact on the Microsoft business for us, either for sell to Microsoft or sell with Microsoft. Sell with Microsoft is continuing to be very robust, and sell to Microsoft is for the time being no major impact coming in there. ओके, तो ज़्यादा कोई वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कह रहे हैं। गोइंग राइट सर, एट्रिशन रेट पे ऑफ कोर्स आपने कहा थोड़ा वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे किस तरीके की हायरिंग हुई है? एट्रिशन रेट लेवल्स आप कैसे देख रहे हैं? जो करंट लेवल्स है उससे कितना और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या यू थिंक यही लेवल्स अब स्टेबल रहेंगे? It will improve. Attrition will definitely improve. It is actually doing in a positive direction now. We see more and more people staying back in the system. No, even if there is an attrition impact comes in, it will be after Q4 or Q1 of next year. We have to wait and watch for that. We are a little cautious on this because now there is an improvement. However, we are honoring all the campus edition offers what we are giving in, and we were not even deferring the campus edition. Within a quarter where we have planned to do, we are continuing to add people on campus. Last year we have done some around 405 people. This year we may do between 550 to 600 based on whatever offer given and the same time frame, at least within the quarter, we will honor all the campus edition. We believe that this steps next year also will continue to be robust on the campus edition. We believe that this will overall in a couple of quarters, it will stabilize a lot. But attrition is definitely in a positive direction. ओके, एट्रिशन डेफिनेटली यहाँ से इम्प्रूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है। सर, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करते हैं, सोल्यूशंस की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की, सो क्या आपका अभी प्लान है टू इंक्रीज प्राइसिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस? क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है इंडस्ट्री में, और मे बी दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ प्राइसेस रीनेगोशिएट हो सकते हैं। Yeah, pricing renegotiation has started last year. Last year, when the cost was going up, we have initiated the process of price negotiation. That is the reason why our margin did not fall much in spite of cost increases happening continuously. We were able to maintain the margin last year because of that. Now the price increase is actually a cycle, no annual. There are some customers we will do an annual cycle. Some will be biannual. Some will be maybe once in 2 years kind of thing. So it all depends on the contract to contract, and there is no one situation or there is no any indication that price increase will not happen. But we are not initiating anything because we have done one cycle of price increases. We will initiate the next thing related to the cost when it comes to the point of where it is, no cost increases are happening or something like this. However, the rupee depreciation is also favoring us. So that benefit is actually helped us to overcome a little bit on the cost side of it. There is no we are not saying that we will not consider any price increases or not. Now it is not the time for things since we have one cycle of price increases have been completed. सर, हम डिस्कशन ऑफ कोर्स बिजनेस को लेकर कर रहे हैं, आउटलुक कैसा है, इंडिया डिमांड कैसी इस वक्त आ रही है। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त डील पाइपलाइन कैसी दिख रही है फॉर द रेस्ट ऑफ FY23? रोबस्ट आउटलुक है सर वहाँ, या आपको लगता है थोड़ी सी कंसर्न्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर्स, थोड़ा वहाँ पर आप स्लो डाउन देखेंगे? स्लो डाउन यार, इसमें क्या है ना, डील पाइप में भी स्ट्रांग है, प्राइसिंग भी डिस्काउंट नहीं है उसमें, नो रीनेगोशिएशन ऑफ द प्राइस भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल डिले भी नहीं है %। एक थोड़ा इसमें डिले 1 और 2 कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, वो बहुत कम है अभी इतना बिजनेस में प्रेशर नहीं है, अभी देखा नहीं है। 2 क्वार्टर पे 1 or 2 quarters later it may have some impact, but अभी कुछ नहीं है इसमें।
नहीं है तो अभी डील पाइपलाइन सर अगर क्वांटिफाई करना हो तो कितना है इस वक्त क्वांटम? अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं पाइपलाइन। अभी भी थोड़ा पब्लिक को डिस्क्लोज करना है, मैं नहीं अभी तक नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन फॉर मी टू टेल यू दैट, बट ओके, डील पाइपलाइन इज गुड कंपेयर्ड टू श्योर। लास्ट ईयर। इट इज कंटिन्यू टू बी गुड। तो रोबिस्ट है ये आप बता सकते हैं और यहाँ पर कोई अभी तक दिक्कत नहीं दिखी है, एक दो क्वार्टर तो फॉर श्योर ठीक ठाक ही जा रहा है। सर आगे एक्विजिशन प्लान्स को लेकर कंपनी का क्या फोकस होगा FY23 में या उसके बियॉन्ड? कोई स्पेशलाइज सोल्यूशंस देख रहे हैं? बिकॉज आई थिंक डिमांड उसके लिए अच्छी बढ़ गई है और वो एक अच्छा एरिया है टू ग्रो। तो आपका क्या व्यू है इस एरिया में? हम आपकी कंपनी में देखेंगे कुछ एक्शन? Yeah. We are looking for acquisitions. We are definitely now inorganic growth is continue to be focus. एक इसमें क्या है ना, ये फोकस हम लोग का क्लाउड और डेटा पे है. We will continue to be having this focus on this, and if a proper valuation, good company growth, all this thing मिल रहे हैं तो हम लोग move forward करते हैं. Inorganic growth is always there for us. We are continuing to focus on inorganic growth. ओके तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर भी फोकस होगा आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए नंबर्स कैसे रहे और आगे मोर इम्पोर्टेंटली कैसा है आउटलुक।